62(1)(f) also perhaps goes on On a lighter note, if you permit, Attorney General, in the morning on the reference I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had surgery, eye surgery, another is indisposed, two out of the country, and two on holidays. So everyone else present here was at the reference. So maybe Churchill comes to our rescue. My lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My lord, the situation now, you had two questions before yourself. In the first order, which my lord said. आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah Baloch does not serious problems with it. He also said there are serious deficiencies. I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not provide answers to the questions which go to the very root of what can happen under 62(1). I mean, we are all relying on Samiullah Baloch, thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. Yeah. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration which is Akhwani says, please understand that. So they're not assuming that they've written it. They say that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer? Is something that we need to understand? Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Akhwani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017, Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with both civil. If it's a criminal conviction, then it has automatically taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. No, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. All convictions are not covered. As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63(1)(h) doesn't cater to it, but it could be covered under 62(1)(f). And there could be other instances also, dishonest misappropriation of property, 2 years. So 363(1)(h) doesn't get triggered, but 62(1)(f) could. If it is a criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against a person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. For example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices ke hain, illegal practices ke hain. Personation is one of the offences, which is being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशरतन में declare कर दिया कि this corrupt practices उसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has
के पास है. The parliament is to answer. So the question precisely is that I mean, so far, the way it's coming out is that it's unworkable. In the current legal framework, no such declaration can come about. So this is unworkable. Now, what is the theory, what's the doctrine? If you see a provision which you set out to interpret is unworkable and can only be fixed through parliamentary intervention, what do we do with that provision? What do you call that provision? I wouldn't say that it is unworkable. I would say that this provision required a legislative, a As it stands, it's unworkable unless there is legislative intervention. in that context, yes. So till then, what happens? What's the answer? My lord, I think my lords may just refer it to the parliament with their observations that this is what is required to be done. Now, and I'd say, I mean, one would think that this should have been done in 2010 itself when the constitution, this amendment was brought in. But then perhaps, the consequences which this provision started producing was something which perhaps the parliament at that time did not contemplate. Or after Ghafoor Lairy's first declaration, which said that it would be, the declaration would not go away with the flux of time, and then Samiullah saying this, Ishaq Akmani was leaving it completely Yeah, with that background. So that, No, but we could just refer it to the parliament with a lighter note as a footnote that please avoid constitutional silences in future because it creates a lot of problems for the court. it does. Otherwise, Mansoor, one way sometimes it's better not to overthink things. And there's a great example from our Islamic history. Ar-Razi was a great jurist. That's right. And he was going, and number of followers were following him. So there was an old woman who said, "Who is this man?" He said, "Don't you know him?" He says, "No." He says he's given 72 proofs of the existence. Razi overhears him, her. Seven-member bench was hearing these proceedings as we are in 2024. Incidentally, 7 members. Incidentally, this question would have long been answered. So as long as this cannot be answered, and perhaps the parliament will have to look at it, till then, F is as good as D, E, and G, and they're all inspirational guidelines, and they will stay in the constitution That's the right. way it is, That's till right. such time the workability is provided by the parliament. That's right, sir. For now, 32(2) only provides the duration. It just leaves the procedure and manner open, and doesn't Not provide commenting it. on the Without 32 commenting. because we might think have different. And Samiullah has to be overruled, my And the lord. parliament is at liberty even to restore the original constitution. I No wish. problem will be solved. I would hope so. I mean, about time we did. We must hope. About time we did. Hey, I don't know, that's up to them. We won't tell them what to do. I mean, it's a wish as the law officer. Are you done? My lord, if I think beyond this, Thanks to the bombshell at the end, and you sort of create every. but I think this will then resolve at least the issue before your lordships in a manner where my submission, and I support all the submissions made with regards to Samiullah being overturned, but it should be overruled. It does not on what it does. It failed to answer the question which was raised by Ishaq Akmani. It does not even discuss them, and also it
Samiullah amounts to reading something into the Constitution which the Constitution did not contemplate. It is a court of law which had to function under a law, jurisdiction conferred upon it under a law, rooted in law. It is only the consequence which flows out of that declaration which is provided in 62(1)(f). Under section 32 subsection 2, Parliament has not tinkered with the consequence at all. Parliament has only provided a duration for that declaration. Duration for the declaration. And so, my lord, I think that way at least there would be guideline for the existing process of election which is underway, but also I think the future Parliament would know what they have to do. Thank you. I presume Advocate Generals don't need to add anything. Ajay, क्या कह रहे हैं? Sorry, you are from which province? Advocate General Punjab, my lord. जी. My lord, I've submitted CMA number 22 of 24, my lord. Law. It's on record, my lord. CMA number? It's 22 of 2024. G. And my lord, for CMA is simply a concise statement. I don't know what I've done is today, I've just made this skeleton of 3 pages. Argument. Lordships. Take. My lord. Considering all the arguments which have already been dealt with, my lord, No. and something which is now left, my lord. These are now the 3 pages skeleton, my lord. Good. These can. Brevity is the soul of wit. Gracious, my lord. जी. Which सूबा? खैबर पख्तूनख्वा, my lord. आपने भी CMA फाइल की है? जनाब, कौन सी? CMA number 40 of 2024 in civil appeal number 981. आपने भी skeleton arguments दिए I've हैं? skeleton arguments with case law and especially vis-a-vis. Excellent. Very gracious. Thank you. बलूचिस्तान आप अडॉप्ट कर रहे हैं? मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, सब जजमेंट्स दे दो For 5. अच्छा. और ऑलरेडी दी हुई है। ये सारा मसला तो बलूचिस्तान से उठा है, समीउल्लाह बलूचिस्तान से है। समीउल्लाह आपने तो हल कर देते सारे मसले। वो कहा कि समीउल्लाह के भाई। हाँ, वो कहाँ गए? हमने तो उनको इजाजत दी थी कि वकील भी कर सकते हैं आज. अच्छा, बाकी कौन सा सूबा रह गया? सिंध. My lord. सिंध not represented. My lord, AG ICT was here. He had to leave. He was feeling very sick, but he said, "I will be adopting the Attorney General." I hope you were not the cause of it. No, my lord. Not due to the case itself. But no, not for the case, my lord. But he said he will be adopting the Attorney General's arguments. So let me thank. My lord, few minutes on behalf of PTI अगर आप मुझे इजाजत दें. अच्छा, हम तो बड़े देर से मुंतज़िर से कोई सियासी पार्टी तो आए हमारे सामने. सर इसलिए हम हाजिर हो गए. नहीं, बड़ी अच्छी बात है. It's always nice to see a smiling थैंक यू face. सर. थैंक यू सर. क्या कहते हैं, बड़ी देर कर दी मेरे बात। नहीं सर, देर अभी नहीं हुई, हम तो पहले ही बहुत देर में हैं. जी, जल्दी में। जी, आपने कुछ फाइल किया है? My lord, जी हमारा जो मेरा कुछ फाइल किया आपने? नहीं सर, मैंने कुछ भी कहा नहीं. मैं सिर्फ अपनी चंद सबमिशन जनाब ने फॉर एंड अगेंस्ट वेरी गुड, अच्छी बात है. जी सर, डिटेल जनाब ने आर्गुमेंट आप सुनी है. हमेशा माशाल्लाह अच्छी तरह से आते हैं प्रिपेयर होके. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑब्लाइज सर. My lord, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है. Represent PTI as a part. आप इसके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. My lord, हमारी सबमिशन ये है कि माय लॉर्ड ने आइन की तशरीह करते हुए 62(1)(f) के बारे में फाइंडिंग्स दे दी. उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई है, जो इन्होंने, जिसको हम ये समझते हैं कि ऑल्दो इट इज ए पर्सन स्पेसिफिक बट विदाउट गोइंग इनटू दैट इशू, क्योंकि ये 62(1)(f) के मुतालिक ये इसको और जजमेंट को नलीफाई कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट को नलीफाई करने का जो तरीका कार ने मुकर्रर किया है 232 सबसेक्शन 2 में, वो मुनासिब नहीं है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी. ये लेजिस्लेशन को देख ही नहीं रहे. आप ये चैलेंज करें ना उसको, हम देखेंगे. मैं इसके बारे में ये मैंने राय मांगी थी कि क्यों हम चैलेंज समझे कि कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेगा. मैंने इसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस लिए कि चैलेंज क्यों नहीं हुआ एट दैट टाइम, ये अलग बात है. लेकिन मैं ये गुजारिश मटीरियल इंस्ट्रक्शंस आए नहीं. वो मटीरियल इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमारी वाली पार्टी में मेरी हद तक कभी होती नहीं है, तो इसलिए
लेकिन ये तो वो हम दरवाजा देखें, जहाँ तक वो बात है आई डोंट नो, मगर गालिबन एक वो दरवाजा शायद हम उस पर हतमी कोई ना हो, वो बात आ सकती है कल परसों। जी जी, वो हम दरवाजे नहीं बंद करेंगे। ठीक फरमा रहे हैं सर। तो मैं सिर्फ अगर दो तीन ये मैं इसको अगर पढ़ लूँ इस अमेंडमेंट को मैं लौट, पहले आप ये बता दें इसके लाइफ के डिस्क्वालिफिकेशन के फेवर में या खिलाफ? मैं ये कहता हूँ कि इट शुड बी फॉर होल ऑफ द टाइम until and unless that constitutional amendment is made, क्योंकि 62(1)(f) के अंदर और 63 के अंदर डिफरेंस है। 63 ने सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि जब कोई शख्स 63G में या H में, फर्ज करो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या कंटेम्प्ट में सजा हो गया, उसके लिए 5 years कर दिया गया। अगर कोई शख्स 2 साल से जायद किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के मुकदमे में सजा में हो गया, उसकी सजा 5 साल कर दी गई, उसमें देयर इज नो डिस्प्यूट। यहाँ आइन बनाने वालों ने इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा। मसलन चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है, कैबिनेट में बैठता है, बिलियंस ऑफ रुपीज ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के फैसले करता है। व्हेन सम कोर्ट ऑफ लॉ हैज डिक्लेयर्ड हिम एज ए करप्ट मैन, करप्शन प्रूव हो जाती है, हाँ वो 1 रुपए की हो या 1 बिलियन की हो, वो प्रूव हो जाती है। और वो ये अलग बात है, उसके बारे में भी जनाब की जो गाइडलाइन आएगी, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ कौन सी होगी, सिविल कोर्ट होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट होगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइंडिंग्स दे दी हैं। बट द इशू इज कि समवन इज, देखिए मेरे लिए एक मसला ये खड़ा हो रहा है, आपके पार्टी मेंबर फैसल वावडा को तो रिलीफ मिली है और वो फॉलो नहीं हुआ है समीउल्लाह बलोच, ठीक है। अब कल को कोई आएगा कहेगा जी शोएब सानी के पास इख्तियार नहीं था पार्टी, क्योंकि आपने कोई चीज फाइल नहीं की हमारे सामने। आप अगर आईनी बात कोई करना चाहते हैं तो अपने ये आप नहीं कह सकते हैं मैं फलां को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। आप किसी और मेंबर ऑफ पीटीआई मैं अपने आप को अपने किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है तरीकेकार होता है, ठीक फरमाते हैं। तो वो कल को कोई खुदा न खास्ते आप पे उंगली ना उठाए, हम सबसे चाहते हैं कि आप पे कोई उंगली ना उठाए। ठीक फरमा, अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं ना? जी सर, अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद आप जमा कर? जी मैं जमा करा दूंगा, अंडरटेकिंग दे सकते हैं, मगर हमें आईनी बात बताए ना। जी सर, मेरी जो सबमिशन है अभी शायद ये इशू नहीं है, ड्यूरेशन वाली बात तो बाद में आएगी। पहले आप कैसे पढ़ते हैं कि डिक्लेरेशन कहाँ से आएगी? अभी झगड़ा इधर का है। जी सर, डिक्लेरेशन अपने लीगल सिस्टम जो हमारा है उसमें डिक्लेरेशन कहाँ से आएगी? जी सर, चूंकि 18th अमेंडमेंट में ये डिक्लेरेशन का लफ्ज डाला गया ना, उससे पहले ये लफ्ज बिल्कुल सही है, लेकिन लाइन कहाँ से? जी उसके लिए अब तो ये जो सेक्शन 32 ने उसको ऐड किया, जो उसके अंदर फिर जो ऐड सबसेक्शन 32 किया, उसके अंदर भी उन्होंने ट्रिब्यूनल को भी उसमें ऐड कर दिया, ट्रिब्यूनल को भी उसमें ऐड कर दिया, ट्रिब्यूनल को ये 232 को जो हम आपको कह रहे हैं ना, 232 में नहीं जा रहे, हम आपसे पूछते हैं कि 62(1)(f) में डिक्लेरेशन कहाँ से आएगी, ये सवाल है। इसमें तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ लिखा गया है, कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर्ड बाय लॉ कोई कोर्ट है, मसलन कोई भी सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है जिसको लॉ के जरिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है कोई कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसाल दें कि कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसी डिक्री मिल जाएगी, ऐसी डिक्लेरेशन मिल जाएगी कि आप अमीन नहीं है। जैसे मैं अर्ज करता हूँ, किसी के खिलाफ करप्शन का मुकदमा हुआ, जैसे ये 2 दिन पहले एक केस था माय लॉर्ड के पास सुप्रीम कोर्ट में आया, मुकदमा नहीं हो सकता। ये इस तरह है कि इंटर पार्टीज का कोई सेल डीड का झगड़ा आ गया, सेल डीड का फोर्स्ड है, चलिए बात तय कर दी, इंटर पार्टीज के दिस सेल डीड इज फोर्स्ड। ये पहले तो जजमेंट इन रेम नहीं है, दिस इज रिलेटिंग टू द पार्टीज ओनली। इससे फिर अखज किया जा रहा है कि क्योंकि सेल डीड फोर्स्ड है, ये आदमी ऑनेस्ट नहीं है। क्या ये करेक्ट तरीका है इस डिक्लेरेशन का? मैं दूसरी मिसाल जो बड़ी क्लियर मिसाल देता हूँ, एक शख्स के खिलाफ एफआईआर कटी, पब्लिक ऑफिस होल्डर था, आपने कहा अब ये सिविल सूट के अंदर सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन फाइल होती है, फ्रॉड डिक्री सेट असाइड हो गई कि हाँ जी ये तो फ्रॉड है और 12(2) के अंदर डिक्री सेट असाइड हो गई। अब वो आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा हो और
कोई जाके कहे कि मेरी 22 की एप्लीकेशन इस शख्स के खिलाफ अलाउ हुई हुई है और डिग्री मेरी सेटिसाइड हो गई है, तो ये तो फ्रॉड हो गया, तो फिर तो गया वो। उसकी ग्रेविटी जरा देखेंगे कि वो किस हद तक है, लेकिन मेरी जो सबमिशन अपनी सबमिशन है ना, मैं जो अर्ज करता हूँ कि एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर था, उसके खिलाफ 1 अरब रुपए की करप्शन का केस प्रूव हो गया, ही बस कन्विक्टेड और 10 साल सजा हो गई, 7 साल सजा हो गई। वैसे क्रिमिनल का तो मसला ही कोई नहीं, उसमें नैब वाले खुद लिख देते हैं कि 10 साल तक अपनी वो तो लिखे हुए ना, सिविल डिक्लेरेशन ऐसी हो तो सिविल डिक्लेरेशन में मैं कैसे होगी? थोड़ा सा उसमें भाम जरूर है, मैं अर्ज करता हूँ, भाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस भाम को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको फिल नहीं कर सकती। ये मैटर विद प्रपोजल एंड सजेशंस जनाब पार्लियामेंट को भेज सकते हैं कि इस भाम को दूर करें। आपका मतलब ये हुआ कि समीउल्लाह में जो डिक्लेयर किया गया, डिटरमाइन किया गया, वो नहीं कर सकते, ये आप कहना चाहते हैं? जी। और दूसरी बात है डिक्लेरेशन, अगर आप सपोज आज हम आपको कहते हैं अब ये डिक्लेरेशन बना है कि फला आदमी आज के बाद सादिक और अमीन नहीं रहा, ऐसी डिक्लेरेशन आएगी ना, इससे हटकर कोई डिक्लेरेशन उसके बिना पर डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी? नहीं सर, फिर तो देखिए ना सर, ये जो डिक्लेरेशन होगी ये किसी मुकदमे में होगी ना, ये तो नहीं हो सकता मैं आज चला जाऊं आ करके किसी that declaration in REM cannot be made. करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन की जो बात है ना, तो नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 15 दिया गया है इस काम के लिए, misuse of authority, डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, 10 साल का पीरियड है इसके लिए। देखिए आपने इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस, आपने कभी ऐसी कोई डिक्लेरेशन ली है? नहीं ली। अच्छा नहीं ली, तो अगर नहीं ली तो फिर कैसे लेने का तरीका रखा, कोई तरीका है? मैं ये कहता हूँ कि उसका तरीका ये हो कि जब किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा है और वो मुकदमे के जरिए एक शख्स साबित हो जाता है किया या कोई ऐसी डिसऑनेस्टी की जिसमें प्रूव हो, अगर उससे साथ ये भी लिखा जाए कि इज नो मोर सादिक और अमीन, फिर तो कोई बात है। ये डिक्लेरेशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नेगेटिव डिक्लेरेशन कॉन्ट्रेरी टू साइड में तो फर्क है, 420 का मुकदमा हो जाएगा वो और बात है। सिविल साइड पे आप तो किसी ट्रांजैक्शन को सेटिसाइड करेंगे ना कि ये गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, 12(2) की, लेकिन मैंने उसमें भी तो देखें, अगर फर्ज करो ये साबित हो जाता है, अगर है होगा तो वो दोनों पार्टियों के बीच में वो जजमेंट है ना। नहीं सर, उसमें भी मैं गुजारिश करूँ, उसमें भी अगर ये साबित हो जाता है कि मसलन ट्रस्ट डीड जो है वो जाली बन गई, ठीक है, फोर्स बन गई, उसमें FIR कट जाएगी, वो काटनी तो फिर और बात है, फिर तो आ जाएगा 63 में, तो मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर सिर्फ सिविल हद तक इतनी तक ही है कि ये इसकी गलत है, ये फोर्स जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, इस हद तक डिक्लेरेशन इज बिटवीन इंटर पार्टीज, इट्स नॉट इन रेम। माय लॉर्ड, तो कैसे होगा ना, ये समझाए ना। लेकिन माय लॉर्ड, अगर इवन इफ तो he will be liable for that. डिक्लेरेशन क्या डिक्लेरेशन आई है? मसलन ये डिक्लेरेशन इस हद तक आ गई है